हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टाइम एंड आई एम गुरमीत कौर। आज हम चैप्टर 16 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे फ्रॉम थ्री विचेस एंड देयर प्रोफेसी। सो लेट्स स्टार्ट। A1 part is who speak these lines in the play and write down what you understand by each line. The first part here is what are these? So withered and so wild in their attire that look not like the inhabitants of the earth and yet are on it. So यहाँ पे जो Banquo है वो क्या कह रहा है? Banquo speaks these lines to Macbeth and he says that the people he has seen are so shriveled. They're so shriveled up, dressed in such wild clothing that they almost seem to be not of this earth, even though they are on it. तो उसे वो जो देखने में बहुत अजीब सी लग रही थी विच इज देव श्रिवल्ड अप का मतलब होता है श्रिंक, टू विदर। जैसे किसी का कोई मॉइस्चर लॉस हो जाए है ना, तो उसी से श्रिंक थी कुछ, और वो बड़ी अजीब से वे में थी। देयर क्लोथिंग वाज वेरी मच वाइल्ड। Second here is if you can look into the seeds of time and see which grain will grow and which will not, speak then to me. Banquo is addressing the witches. अब वो witches से बोल रहा है after they have hailed Macbeth. Hailed का मतलब होता है किसी की praise करना, to proclaim that somebody or something is very good. Okay, and they have said na ki Macbeth as Thane of Glamis and Thane of Cawdor and king, and he says to them that if they can actually look at time and say which of the seeds sown shall grow and which shall not, they should tell him, not because he begs them nor because he fears them. So Banquo यहाँ जो है witches को address कर रहा है। Third here is the king had happily received Macbeth, the news of the success. Ross speak these words to Macbeth after the witches vanish, and he is telling Macbeth how happy the king is with him for winning the fight against the rebels. The news of the success means the means yours. The word means it's an old fashion or you can say a religious word for your. तो वो क्या कहता है कि वो कहता है कि he's telling Macbeth how happy the king is with him. क्यों है राजा उससे खुश? Because he is winning the fight against the rebels. अब rebels कौन होते हैं? Rebels होते हैं a person who fight against his or her own country's government because they want some changes. They want things to change. तो वो उन्हें देशद्रोही भी कहा जा सकता है। तो दे आर दी persons who fight against his or her country's government. So उनको वो जीत कर आया था, उनके साथ फाइट थी जिसमें कि मैकबेथ जीत गया था and the king is very happy. The Thane of Cawdor lives. Why do you address me in borrowed robes? So Macbeth speaks these words to Ross when he calls him the Thane of Cawdor in addition to calling him Thane of Glamis. तो उसे वो थेन ऑफ कॉडर, कॉडर जो है इट्स नेम ऑफ अ प्लेस, तो इट टर्न्स आउट दैट द थेन ऑफ कॉडर हैड जॉइंड हैंड्स विद द रेबल्स एंड बिकॉज ऑफ हिज ट्रिया सन वाज लाइकली टू लूज हिज लाइफ, व्हिच वाज व्हाई द किंग हैड बेस्टोन्ड द टाइटल अपॉन मैकबेथ. अब इसको अच्छे से समझ लीजिए. मैकबेथ स्पीक दीज वर्ड्स टू रॉस व्हेन ही कॉल्स हिम द थेन ऑफ कॉडर. अब थेन का क्या मतलब होता है? थेन का मतलब होता है हु हेल्ड लैंड फॉर स्कॉटिश किंग. तो अ मैन हु वॉज गिवन लैंड बाय द किंग. ओके, तो उसे उस कॉडर एक जगह है वहां का भी उसको लैंड दिया गया है. अ मैन हु वॉज गिवन लैंड बाय द किंग, थेन ऑफ कॉडर भी बना दिया गया है in addition to calling him Thane of Glamis. Okay, it turns out that the Thane of Cawdor had joined hands, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी वहां पे Thane of Cawdor था, लेकिन अब क्या हो गया है, उसने क्या किया है, उसने रेबल्स का साथ दिया था. And because of his triason का मतलब है because of the criminal harm to your country, helping its enemies, because उसने enemies को help किया, तो because of his triason was likely to
lose his life, तो उसको भी मार दिया जाएगा, which was why the king had bestowed the title upon Macbeth. Bestow means to give something to somebody, तो उसको ये टाइटल भी दे दिया गया था. Especially to show respect. Bestow means to give something to somebody, especially to show respect, because Macbeth जो है अच्छा काम कर कर आ रहा है, लड़ाई जीत कर आ रहा है, और जो है थेन ऑफ कॉर्डर था वो क्या था, रेबल्स के साथ मिला हुआ था, और इसलिए अब जो है थेन ऑफ कॉर्डर मैकबेथ को बनाया जाएगा. ही विल बी द थेन ऑफ कॉर्डर ऑल्सो. Part 2, A to answer these questions. Here question number 1 is, what 3 predictions do the witches make about Macbeth? अब Macbeth के लिए क्या क्या predict किया था witches ने, ठीक है. The 3 predictions that the witches make about Macbeth are to hail him as the Thane of Glamis, the Thane of Cawdor, and as the king. ठीक है, तो इसको ग्लैमरस का भी बोला था उन्होंने, कॉडर का भी बोला था उन्होंने, कहा था कि तो किंग भी बनोगे. Question number 2, what does Macbeth react on hearing the predictions? उसको कैसा लगा? Macbeth is very startled upon hearing these prophecies and questions them, asking them how is it is possible, ये सब कैसे हो सकता है. He was startled. He was startled means he was surprised. It was a sudden surprise for him upon hearing these prophecies. Prophecies कहते हैं a statement about what is going to happen in future. जैसे कि एस्ट्रोलॉजर्स भी करते हैं, दे टेल्स यू योर फ्यूचर, ठीक है. दे आर स्टेटमेंट्स अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन योर कमिंग फ्यूचर. तो ये जो प्रोफेसीज इन्हें कहते हैं, तो ये जो प्रोफेसीज उन्होंने दी थी, विचेस ने बोली थी, तो ये उसने बोला कि ये सब कैसे हो सकता है. And he was startled upon hearing these prophecies. Question number 3, what is the witch's prophecy for Banquo? अब Banquo के लिए उन्होंने क्या बोला? The witch's prophecies for Banquo are very puzzling. ठीक है, थोड़ा उन्होंने puzzle कर दिया. They say he is lesser than Macbeth but greater, not as happy as Macbeth but much happier, and that his offspring will be kings although he will not. तो कितना कंफ्यूजिंग सा कर दिया कि अब जब राजा तो मैकबेथ बनेगा, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि जो बच्चे होंगे बैंको के, उसके बच्चे जो है वो राजा बनेंगे. तो there is a kind of misunderstanding type of a thing they have created among Macbeth and Banquo. तो Banquo जो है ये के लिए जो उन्होंने बोला, जो प्रोफेसी उन्होंने की, जो उन्होंने स्टेटमेंट दी, वो थोड़ी सी पजलिंग है. How does the king reward Macbeth for his bravery? The king rewards Macbeth for his bravery by bestowing the additional title of Thane of Cawdor upon him. तो किंग ने उसे क्या कैसे रिवॉर्ड दिया? उसको थेन ऑफ कॉर्डर भी बना दिया. What does Macbeth mean by the greatest is behind? अब वो कह रहा है कि जो बड़ी बात होने वाली है, तो अभी तो still he has not reached that place. By saying the greatest is behind, Macbeth means that the first 2 predictions have fulfilled. They have been fulfilled. He has become Thane of Glamis or Thane of Cawdor, but it now remains for the last. And what was that? To become a king, and greatest one to be fulfilled. Question number 6, quote the lines in which Banquo warns Macbeth. अब Banquo ने Macbeth को warn भी किया था. The lines where Banquo warns Macbeth are, you have to learn all these as it is. And oftentimes to win us to our harm, the instruments of darkness tell us truths. Win us with honest trifles to betray in deepest consequence. Cousins, a word I pray you. तो वो क्या कह रहा है यहाँ पर? Banquo उसको समझा रहा है कि तुम इनकी बातों में मत आओ. He warns Macbeth that evil creatures do not necessarily lie, but sometimes they say true things in order to tempt people into harming themselves, okay, and making awful things happen. तो वो उसे समझा रहा है कि इनकी बातों में नहीं आना चाहिए. So Macbeth जो होता है बड़ा impress हो रखा होता है by the witches prophecies, और उसको डर है Macbeth को कि ये कुछ गलत ना कर बैठे.
Now A3 part is think and answer. Here question number 1 is it correct to say that Banquo is more cautious by temperament while Macbeth gets easily excited? Give reason for your answer. So Banquo is more cautious than Macbeth because he is not easily swayed by the witches. Swayed का मतलब होता है to influence somebody, to incline in an opinion. Here you can say incline, मतलब उनकी बातों में नहीं आया वो. He was not easily swayed by the witches' words and says warning words about how these predictions lead men to do the wrong things in order to make the predictions come true. क्योंकि उसको दिख रहा था कि मैकबेथ उनकी बातों में आ चुका है. दे आर दी एविल स्पिरिट्स और वो उनकी बातों में आ चुका है. उसको दिख रहा था कि उसकी प्रेडिक्शंस को वो सही मान रहा है और उसने बोला कि ये जो है प्रेडिक्शंस कैन लीड टू डू द रॉन्ग थिंग्स. तुम इनकी बातों में आकर कुछ गलत करोगे इन ऑर्डर टू मेक द प्रेडिक्शंस कम ट्रू. सो दिस इज द आंसर. Question number 2. Do you think the prophecies of the witches will play a crucial role later in the play? Give reason for your answer. अब मैकबेथ का तो पूरा दिमाग घुमा चुकी हैं विचेस, है ना. उसको पूरा अच्छे से उन्होंने कंट्रोल कर लिया है. काइंड ऑफ यू कैन से yes, the prophecies of the witches will definitely play a crucial role later in the play. क्यों? क्योंकि the prophecies will definitely draw Macbeth's thirst for power. पहले भी उसने बोला कि अभी मेरी जो थर्ड विश है वो पूरी होनी रहती है ना. तो 2 तो हो गई हैं प्रेडिक्शंस, लेकिन जो थर्ड वन है उसको he was longing for it. The prophecies will definitely draw Macbeth's thirst for power and the witches influence Macbeth and his achievements and awake his ambitions. And they gave him a wrong sense of security with their apportions of truth. Apportions of truth का मतलब होता है to give share of something to somebody. तो इसका दिमाग को पूरा तरह से पूरी सच्चाई ना बताकर कुछ इस तरह से उसको मैनिपुलेट कर दिया था. Macbeth will definitely make decisions to make the prophecies come true rather than believing that his actions were predetermined. ठीक है, तो इस तरह से मैकबेथ जो है कुछ गलत भी कर सकता है ना. तो बैंको को भी पता था कि मैकबेथ डेफिनेटली उनकी बातों में आ चुका है एंड ही कैन प्रूव टू बी डिसलॉयल टू द किंग. ओके, तो ये जो है इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ द नॉवल, जस्ट अ पार्ट ऑफ द प्ले. ओके, तो अगर जब आप इसको पूरा पढ़ेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट है, तो उसमें क्या होता है कि सच्ची में जो मैकबेथ है वो डिसलॉयल हो जाता है टू द किंग. ही इवन किल्स द किंग. जो डंकन किंग है, स्कॉटिश किंग है, उसको ये मार डालता है. Even his wife also come into limelight and एक 2 और करेक्टर्स भी इसमें एंटर होते हैं. तो इस तरह से ये जो है प्ले आगे चलता है. बट यू हैव रेड ओनली दिस मच पार्ट, सो देयर यू कैन मेक ऑल दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स दैट डेफिनेटली वो कुछ ऐसा गलत करेगा क्योंकि अब उसके जो एम्बिशंस है वो अवेक हो गए हैं. ओके, और वो उन्हें पाने के लिए टू बिकम अ किंग वो कुछ भी कर सकता है. So prophecies will definitely draw Macbeth's thirst for power. So this answer would be enough for this part of the play. Thank you so much, and if you like my video, kindly share and subscribe. I hope कि अगर आपकी फिर भी कोई आपकी सारी आंसर्स आपको समझ आ गए होंगे, लेकिन अगर still you have any doubts, you can ask me in the comment section. Thank you so much.